Assalamualaikum. Hello, everyone. Today we've got an esteemed guest with us, जिनका नाम Ahmed Shah है. He's a seasoned entrepreneur who's been in the industry for quite a bit of time. So we're just going to go through an interview with him. हम उनके experiences जानेंगे, उनसे पूछेंगे कि उन्होंने क्या उनकी journey रही, क्या सीखा, क्या सिखाना चाहेंगे for the future leaders of Pakistan. So before I start, my name's Umair Asif. You must have seen a few of our videos from Startupistan. Startupistan is a platform where you can tune in and get inspiration from leaders within either your industry or other industries because कोई ना कोई relatable content हमेशा मिल ही जाता है. So that's me. That's Bilal. Bilal is my partner. Assalamualaikum ji, my name is Bilal, as you have mentioned, Startupistan, and हमारे साथ हैं अहमद साहब. अहमद साहब अपना इंट्रोडक्शन खुद देंगे. Gee, why not? My name is Ahmed Shahji. Uh, I'm basically a businessman, or you can say I'm an architect. So I've started calling myself archipreneur. I'm not an entrepreneur. I'm not a businessman. I'm not an architect. I'm an archipreneur. Okay. So what does the term entrepreneur actually mean? Well, it's from architecture I've taken from an architect I've taken archi, and from entrepreneur I've taken the last part, the preneur part. So it's an archipreneur, an architect who does things differently. Right. So giving a little perspective in the sense here, you want to bring an entrepreneurship perspective within the architectural field. Yes, exactly, to be true. I wasn't an entrepreneur and archipreneur, I would say, a few years back, till I joined an organization called EO, Entrepreneurs Organization. I think this is back in 2016. I joined them. Right. So EO is a global organization, amazing, more than 12,000, 13,000 members globally. And it's a platform, it's a learning platform basically. And it changed my life. The moment I joined it, it changed my life. And it started, I started thinking differently. I had no idea what an entrepreneurial thinking is till I joined EO back in 2016. उससे पहले I used to look at things in a very different way, like we all do, in like a normal businessman does, or like a normal architect does. What EO did, or is they made me realize what is vision and what is passion, and then what is your profession, and how you can तीनों चीजों को साथ लेके कैसे चल सकते हैं. Right. Yeah, it's good to know, but usse pehle, I'd like actually to take a step back, and I'd like to go through the journey that you've had. From graduating, EOB. Obviously, you joined EO, a company, an entrepreneurs organization. There must have been some drive to say, okay, this is an entrepreneurs organization. I want to join this. So that spark that came for becoming an entrepreneur. I want you to kind of touch upon those things to say why you wanted to become an entrepreneur, why you wanted to join EO, through, and just walk us, give us a little 2-3 minutes of your journey, which took you to that point. And keeping in mind the audience that we have are people who are aspiring to become entrepreneurs. So उनके लिए क्या inspiring अगर आप दे सकते हैं कोई 2 minutes. So basically, you're asking me to share some part of my life story with you guys. So when I was becoming an architect, trust me, when I joined architecture, I had no idea what architecture is. मुझे architecture word भी पूरी तरह से बोलना नहीं आता था. My dad wanted me to become a civil engineer, और luckily मेरे नंबर इतने ज़्यादा नहीं आए थे कि civil engineering में admission मिल जाता. So I got admitted in architecture, and I said luckily. So आफ्टर ग्रेजुएटिंग सब लोग जॉब ढूंढ रहे थे, गवर्नमेंट लेवल पे जॉब्स होती हैं और इस तरह से, बट आई वाज द ओनली वन जो गवर्नमेंट लेवल पे जॉब नहीं करना चाहता था. बट आई वेंट फॉर फ्यू गवर्नमेंट इंटरव्यूज, एंड बिलीव मी, यानी इन वन ऑफ द इंटरव्यूज दे आस्क्ड मी क्वेश्चन अबाउट इस्लाम, एंड अनदर क्वेश्चन अबाउट एक हमारा सब्जेक्ट होता है जिसको उर्दू में कहते हैं माशरते अलूम.
जी बिल्कुल. तो उसके बारे में उन्होंने मुझे 2 क्वेश्चन किया एंड इट वाज अ पैनल ऑफ 4 पीपल एंड आई रिप्लाइड देम दैट आई एम सॉरी, मुझे इनका जवाब नहीं आता बिकॉज़ आई थिंक इट हैज़ नथिंग टू डू विद माय जॉब और माय प्रोफेशन. एंड ऑफ कोर्स रिजल्ट आप लोगों को पता ही है कि क्या निकला होगा. दे किक्ड मी आउट and I never wanted to do a job. But anyways, I worked with Nair Saab and Nair Ali Dada in Lahore for 3 years. And एक्चुअली जो जॉब वाला पार्ट था वो मैंने अपनी स्टूडेंट लाइफ में ही कर लिया था. तो स्टूडेंट लाइफ के बाद मुझे यही था कि मैंने जॉब नहीं करनी, मुझे अपना ही बिजनेस करना है या अपना ही कुछ स्टार्ट करना है. उस वक्त एंटरप्रेन्योर शायद वर्ड तो होता था लेकिन मुझे नहीं पता था कि एंटरप्रेन्योर क्या होता. सो आई स्टार्टेड, यानी मुझे फिर सऊदी अरेबिया में जॉब मिल गई. आई वेंट देयर, आई वर्कड फॉर अ ईयर. वहाँ से मैंने आई स्टार्टेड माय ओन कंपनी, अ डिज़ाइन कंपनी. मी एंड माय वाइफ इज़ एन इंटीरियर डिज़ाइनर. So we started working from home, और उसमें we won a couple of projects and then we established our own company, and then we decided to move to Bahrain back in 2003, and we established a company directly under our name. Bahrain was quite an open country, business friendly country even at that time. They allowed us to make a company under our name, so we opened a company over there. And then back in 2016, I think we opened up an office in London, and also by end of 2016 an office in Lahore. And then eventually, I think 2020, we opened an office in Turkey as well. So during this whole time, I never wanted to do a job. I always wanted to have my own company and have my own business, because as an architect, I believe that architecture is more art than science. So in art, you need a free mind, you need a free hand. So that was like one of the things जो मुझे हमेशा force करता था कि मैं अपनी ही company run करूँ rather than कि मैं job करूँ. To become an entrepreneur was never in my mind. Coming back to your question, uh, entrepreneurship, as I said, I only learned about entrepreneurship in 2016, and then I started thinking like an entrepreneur. And now these last 4 or 5 years have been a remarkable learning uh, journey for me. I have learned so much जो कि मैंने अपनी पूरी लाइफ में इतना नहीं सीखा जितने पिछले इन 4-5 सालों में सीखा है. Right. So, matlab, when you learned about the word entrepreneur, like you said, कि आपने 2016 में actually सीखा कि entrepreneurship होती क्या है. And then generally, when you learn something, you're going through something. I always do this. I don't know about other people, but I know a few people do this. Is they reflect back and think, अच्छा, entrepreneurship ये चीज़ है, लेकिन मैं ये चीज़ पहले भी कर रहा था. So what traits did you have at that point when you started your career up? You went to Saudi Arabia, obviously you went to Bahrain. What traits do you think you had would actually what kind of label you as an entrepreneur at that time? And वो क्या traits हैं जो आपको push करती थी कि मैंने job नहीं करनी, मैंने जो है because I want to have a free mind, क्योंकि आजकल freedom तो science में भी है. You look at technology, you look at all these new apps that are coming out. There's a lot of freedom in thinking उस चीज के अंदर. So what kind of traits do you think आपके already चलते हुए आ रहे थे that were leading you up to becoming this entrepreneur, and getting inducted into EO, etc. Yeah, to be true, एक तो उसमें एक दिमाग में ये कीड़ा था कि I want to be a boss, my own boss, जो कि अब नहीं है. अब after joining EO, it's a different thinking. तो पहली बात तो ये थी कि वो एक बड़ी गलत किस्म की अप्रोच थी कि मुझे बॉस बनना, कभी किसी के अंडर काम नहीं करना. तो वो आई डोंट नो इसको आप नेगेटिव लोगे कि पॉजिटिव लोगे, जो भी लोगे लर्निंग तो उसमें है. तो वो मेरे अंदर एक चीज़ थी जिसको कि मैं कभी भूल नहीं सकता और इग्नोर भी नहीं कर सकता. और यूँ समझ लो कि इसमें एक गुरूर और तकब्बुर का एलिमेंट भी आता है. मतलब नॉट इन द रॉन्ग सेंस, बट आई डोंट नो उसको आप क्या अफेक्टेशन कह सकते हो या इंसुलेंस आपकी जो होती है वो कह सकते हो, समथिंग लाइक दैट. बट वो था एक. और दूसरा आई थिंक मेरा पैशन था फॉर, आई वोंट से फॉर माय प्रोफेशन, but my passion to
make money. इनिशियली मैं उसको यही समझता था कि ये मेरा पैशन है कि मुझे पैसा बनाना है, और उसके लिए आप एज अ बिजनेसमैन ही पैसा बना सकते हो, एज जॉब करके आप उस तरह से अर्न नहीं कर सकते. तो ये चूंकि मेरी एंटरप्रेन्योरल थिंकिंग ही नहीं थी, तो इसलिए मैंने कभी इतना डीप सोचा ही नहीं था कि वो क्या था. अगर मैं रिफ्लेक्ट बैक करता हूँ तो मुझे उस वक्त अपने अंदर जो खूबियाँ नज़र आती हैं वो ये दो ही थी कि मैं या तो गरूर और तकब्बुर बड़ा था बॉस बनने का, और या ये था कि बस पैसा बनाना है और वो बिजनेस में ही बना सकते हो, वैसे नहीं बनता. अदरवाइज अगर मैं रिफ्लेक्ट बैक करूँ तो इतनी कोई खास खूबियाँ मुझे अपने अंदर नज़र नहीं आती थी कि मैं जी शुरू से ही ऐसा था इसलिए मैं अब ऐसा बन गया. वो मैं जो भी बनाऊँ वो मैं सीख के बनाऊँ, वो मैंने सीखा है. और एबिलिटी टू बेसिकली आई वुड से एक्सेप्ट कि यस आई हैव दिस फॉल्ट इन मी, ये मेरे अंदर गलतियां हैं या ये मैं गलत कर रहा हूँ, मुझे इनको सही तरीके से सीखना है और सही तरीके से करेक्ट करना है. ये एक ऐसी चीज़ है जो मेरे अंदर हमेशा रही है और आज तक है. एंड इमेजिन कि मैंने इस 2020 दिस कोविड पेंडेमिक ईयर में आई हैव लर्न सो मच जो कि मैंने शायद सारी जिंदगी नहीं सोचा. मुझे कभी नहीं पता था कि ये लैपटॉप क्या चीज़ होती है, मैं यूज़ ही नहीं करता था. मेरी वही थिंकिंग अभी तक वो बॉस वाली थिंकिंग थी कि जब मैं इफ आई बिल गेट्स वाली बात है कि अगर मैं लोगों को हायर कर सकता हूँ तो मैं खुद क्यों करूँ ये. तो मैं लोगों को हायर करता था और उनसे काम करवाता था. लेकिन ये 2020 में मैंने फर्स्ट टाइम बैठ के सोचा कि यार ये लैपटॉप होता क्या है और लोग लैपटॉप पे बैठ के मिलियनर्स कैसे बनते हैं. और अब मुझे समझ आई कि ये लैपटॉप कितनी पावरफुल चीज़ है. सो ये लर्निंग पार्ट, किसी चीज़ को लर्न करना या उसको सीखना और फिर ये एक्सेप्ट कर लेना कि मेरे अंदर ये गलती है और इसको मैंने किस तरह से करेक्ट करना, दिस वाज आई थिंक माय दिस इज माय बिगेस्ट ड्राइव. But एक आजकल there's and Bilal, I like you to weigh in on this as well. आजकल मैं एक भी डिस्कशन पूछना चल चाह रही रहा है. था, आप कंप्लीट करो फिर पूछता हूँ. हाँ, एक बड़ा डिस्कशन चल रही है कि जी, और एटलीस्ट आज के यू टच्ड ऑन द पेंडेमिक, एंड मैं बड़ा देखता हूँ ये कि जी लाइफस्टाइल ब्लॉगर्स, इंस्टाग्राम ब्लॉगर्स, एवरीवनस लाइक फॉलो योर पैशन, यू नो. बट what मतलब I'd like to get your take on this, both of you, is कि should you follow your passion, or should you work on your strengths, because your strength is not always your passion, you know. Is what is actually going to make you more successful? That's my question to both of you. Bilal. Bilal, would you like to go first? सर आप स्टार्ट करें एंड देन आई विल गिव माय. Well, I don't know ये इंटरव्यू कहाँ सुना जाएगा, बट मेरे ख्याल में दिस इज saying this के just follow your passion is a bullshit thing, you know. आपको ऐसा नहीं कर सकते आप. एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल जो ये कहते हैं बात, वो वही लोग हैं जिनके पास इतना ज़्यादा पैसा है कि वो अपने रियल पैशन को फॉलो कर सकते हैं. जब आपके पास कुछ है ही नहीं, आप अपने पैशन को फुलफिल ही नहीं कर सकते. जैसे मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ. मैं पहले सोचता था कि हर चीज़ मेरा पैशन है. इवेंचुअली आई फिगर्ड आउट कि मेरे सिर्फ दो ही पैशन है. वन इज म्यूजिक एंड द अदर इज क्रिकेट. आर्किटेक्चर वॉज नेवर माई पैशन, इट वॉज माई प्रोफेशन. But yes, वो एक separate debate है that how I converted my passion into my profession, converted my profession as into my passion, and how you can convert your passion into your profession. वो एक आपकी मतलब दूसरी. strength architecture थी, you followed your strength, and उसको slowly, because you're leading in that field, it slowly became a passion. If I'm putting words in your mouth, do you think I'm right? Well, I don't know architecture is my strength or not, but architecture is my profession. Right. Not necessarily कि आपका profession जो है वो आपकी strength भी हो, but it is something from where I make money. So this means कि मुझे वो मेरा passion कभी भी नहीं था, वो हमेशा से मेरा profession था. Passion वो चीज़ है जो आपकी habit नहीं कह सकते आप. Passion is not a habit. Passion is something that you dream about. So I said my passion is, for example, cricket. अब क्रिकेट मैच देखने के लिए मैं रात को 2 बजे भी उठ सकता हूँ. एक हैबिट के लिए मैं 2 बजे नहीं उठूंगा. एक अपने म्यूजिक के लिए मैं पूरा दिन में ऐसा टाइम जरूर निकालूंगा. मैं काम करते हुए भी म्यूजिक सुन सकता हूँ, और अगर काम बहुत ज्यादा काम कर रहा हूँ, अपना डिजाइन का काम कर रहा हूँ, और सडनली कोई ऐसा म्यूजिक मेरे कान से गुजर गया, तो आई लीव द वर्क एंड स्टार्ट एक्सप्लोरिंग के यार ये किसका गाना है, ये म्यूजिक कहाँ से आया. फिर तो आई थिंक वी शुड स्टॉप हियर, बिकॉज़ बिलाल तो बड़ा म्यूजिशियन है. लगता है वो बिलाल साहब गुनगुनाएंगे. नहीं, तो नहीं, बट मैं बड़ा रिलेट कर सकता हूँ ये जो बात कर रहे हैं.
10 साल इवेंट्स करता रहूं, मेरा पैशन नहीं था, पैसे बनते थे तो करता था, वो स्ट्रेंथ और वो वाली जो चीज़ है, लाइफस्टाइल ब्लॉगर से बड़ा बहुत बड़ा मेरा और उमर का इख्तलाफ भी है। अगर आप एक चीज़ में अच्छे हैं, आपकी स्ट्रेंथ है, तो आई थिंक करनी चाहिए। एंड मेरे ख्याल में आपका जो काम है वो कैन नेवर बी योर पैशन। मुझे लगता है कि अगर आप वो अहमद वाली बात के प्रोफेशन प्रोफेशन होता है, पैशन पैशन होता है, जिस तरह मुझे पैशन है म्यूजिक का है, और चीज़ों का है। सो आई थिंक जो भी इन्फ्लुएंसर्स है वो भी स्ट्रेंथ पे पहले काम करना चाहिए, आई थिंक उसके बाद पैशन ऑटोमेटिकली थोड़ा बहुत आ ही जाता है। बट एक दिन और बड़ी अच्छी बात थी कि यू आस्क्ड हिम कि इवेंचुअली फिर जो आर्किटेक्चर था वो आपका पैशन बन गया, तो ही सेड नहीं, दैट्स माय प्रोफेशन। सो वो ही इज राइट, वो प्रोफेशन प्रोफेशन ही रहता। पर बट लेकिन एक जो हाँ हाँ कितना इम्पैक्ट है आपकी एक्सटर्नैलिटीज पे, आपकी इंटरनल, well obviously this is opening a very wide debate, लेकिन इंटरनली अगर आप पैशनेट हैं किसी चीज़ के ऊपर, राइट, वो कहते हैं ना ग्रैब लाइफ बाय द बॉल्स, वो वाली चीज़ कि मेरा इतना पैशन है कि मैं जो आई एम जस्ट गोइंग टू डू दिस एंड दैट। तो someone who's trying to become an entrepreneur, is it just passion that can drive them? That's my sort of question is चीज़ के ऊपर। Okay, do you actually need to go, you need to research, you need to do your homework, and there's no shortcuts इस चीज़ के अंदर, जहाँ तक मेरा हिसाब है। That's my answer. मतलब I would think you need to have some sort of foundation, उसके बाद you start developing your passions. You need to come across passionate, but I don't know, it's not necessarily one's passion. That's my take on it, I suppose. आई थिंक उन्होंने पहले आंसर किया भी है, कि उनको पैसे कमाने थे, उनका पैशन पैसे कमाना था, सो उसके पीछे वो आपकी एबिलिटीज भी आ जाती हैं, वो भी आती हैं। बट मैं चाहूंगा अहमद साहब इसका जवाब दें। मेरे ख्याल में तो यार उमर बात यहाँ पे ख़त्म हो जाती है कि अनलेस एंड अनटिल आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी नहीं है इन टर्म्स ऑफ जो आपकी इनकम नहीं आ रही है, एक स्टेबल इनकम नहीं आ रही, आप किसी भी किस्म पैशन को फुलफिल ही नहीं कर सकते। 100%। आप जो बार बार बात कर रहे हो, मेरे ख्याल में वो बात ये है कि आपने अपने पैशन को प्रोफेशन में कैसे कन्वर्ट करना है। या तो आप अपने पैशन को प्रोफेशन में कन्वर्ट कर लो, या अपने प्रोफेशन को पैशन बना लो। दोनों सूरतों में आपका काम हो सकता है। इफ यू आर सो पैशनेट कि नहीं यार मुझे अपने पैशन को ही फॉलो करना है, तो देन लर्न हाउ टू कन्वर्ट योर पैशन इनटू योर प्रोफेशन। Unless and until you're not making money out of it, or you're not making money, or you're not stable enough in your life, किसी भी तरह से, be it your passion or be it your profession or be it your inheritance or be it money from your dad or somewhere, आप वो पैशन कर ही नहीं सकते। पैशन आप सिर्फ उस वक्त कर सकते हो जब आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी है, आपके अंदर आप एक अच्छी जिंदगी गुजार रहे हो। अदरवाइज तो वो फिर आप वो जो है ना, क्या कहते हैं, वो आपने मूवी देखी होगी, वो क्या नाम थी यार, वो इंडियन मूवी थी जिसमें कि वो सिंगर होता है, मुझे उसका लड़के का नाम नहीं आता, हाँ, जिसके गाने भी बड़े मशहूर हुए थे। तो वो उस मूवी में वो सिंगर होता है, अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेता है उस सिंगिंग के पीछे, क्योंकि सिंगिंग उसका पैशन होता है, बट उसकी बाकी की लाइफ सारी शिट हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही होगा। आपके पास अगर कुछ है ही नहीं तो आप पैशन को कहाँ तक लेके जाओगे? बिल्कुल सही है। बिलाल, आई जस्ट वांटेड टू आस्क, थोड़ा सा वापस वो जर्नी की तरफ भी जाना चाहूंगा, बिकॉज मैं चाह रहा था थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और व्यूअर्स को मिल सके कि हाउ डिफिकल्ट इट वाज, बिकॉज आपने बताया आपकी सऊदीया में जॉब होगी, तो आई बिलीव अच्छे खासे आपको पैसे मिल रहे होंगे। हाउ डिफिकल्ट इट वाज पूरा का पूरी ट्रांजिशन, मतलब जॉब छोड़ना कितना डिफिकल्ट था, वो डिसीजन लेना, बिजनेस स्टार्ट करना, कितनी सपोर्टिव आपकी फैमिली थी, कितने सपोर्टिव आपके वो थे, एंड क्या डिफिकल्टीज आपने फेस की जॉब छोड़ने के बाद बिजनेस को बढ़ाने में, या क्या ऐसे स्टेप्स हैं जो लेने चाहिए बाकियों को भी, आपके एक्सपीरियंस से अगर कोई लर्न कर सके तो। गुड। मेरा एक वो मेरे दो प्लेटफॉर्म है, एक है आर्किटॉक्स एंड सेकंड वन इज कॉल्ड लाइफ टॉक्स। सो ये जो आप मेरे साथ कर रहे हो, पता नहीं ये किस कैटेगरी में आता है, बट लाइफ टॉक्स में वी इनवाइट पीपल एंड ऑर्डिनरी पीपल एंड दे टॉक अबाउट देयर लाइफ्स। यानी इट कैन बी अ डिलीवरी बॉय,
उसकी जो लाइफ है वो भी एक सक्सेस स्टोरी है। तो वो उसमें आता है, वो बोलता है कि भाई मैं कहाँ से था, कौन से गांव से था, कहाँ आ गया, मोटरसाइकिल ले ली, ये कर लिया, वो कर लिया, बाहर चला गया, पैसे कमा रहा हूँ, जो भी है वो अपनी लाइफ स्टोरीज बयान करता है। आर्किटेक्ट्स, जैसे उमर ने कहा था, स्पेयरली फॉर आर्किटेक्ट्स। तो उसमें मैंने एक लाइव टॉक्स में मैंने एक प्रेजेंटेशन की थी, उसका जो टाइटल था वो ये था कि किस मुंह से जाऊं। तो आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर मैं उसी इसके रेफरेंस में देना चाहूँगा। सो यू प्लीज डू रिमेंबर द स्टेटमेंट कि किस मुंह से जाऊं। तो जब मैंने शुरू किया ना अपना सऊदी अरेबिया वाली जॉब छोड़ना, वाज अ वेरी इजी डिसीजन फॉर मी बिकॉज दैट वाज अ कंस्ट्रक्शन कंपनी एंड आई एम एन आर्किटेक्ट। तो मैंने 1 साल के बाद ही उनको जवाब दे दिया था। और सेकेंडली वो ट्रस्ट मी बिल्कुल अच्छी पे नहीं थी, इट वाजंट अ पेइंग जॉब एट ऑल। और बिजनेस वहाँ पे स्टार्ट जो मैंने किया उसमें डिफरेंट चांसेस मैंने लिए। कारपेंट्री शॉप तक रन करने की कोशिश की कि अपने चीज़ें सीख सकूं कि कारपेंट्री क्या होती है, एंड बहुत सी चीज़ें की, उसमें बहुत से सबक भी सीखे। एक मेरा क्लाइंट था जो कि मुतव्वा था, मौलवी था। तो उसके साथ जब मैंने काम किया तो उसने मेरे आखिरी पेमेंट मुझे नहीं की, पैसे मार लिए। और एक मेरा जो क्लाइंट था उसी दौर में वो बड़ा शराबी कबाबी था और उसने भी मेरे पैसे मार लिए। तो वहाँ से मुझे समझ आई कि ये पैसे मारने का ताल्लुक जो है ना, इसका मज़हब से कुछ रिश्ता नहीं है, ना शराबी कबाबी होने से रिश्ता है। इट हैज़ एवरीथिंग टू डू विद द कैरेक्टर ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। तो खैर वो सारी चीज़ें मेरे साथ होती थी, बट द मोमेंट कोई चीज़ ख़राब होती थी ना तो वो ऑटोमेटिकली ठीक भी हो जाती थी। अब वो पता नहीं ऑटोमेटिकली होती थी कि उसका ऊपर वाला मेरी नीयत देख रहा होता था कि मैं किस नीयत से कर रहा हूँ। आई स्टिल रिमेंबर कि मेरे जब बेटी पैदा हुई तो आई वाजंट अर्निंग इनफ, और मेरे जितने दोस्त यार थे दे वर वेरी वेल ऑफ और उनके बच्चे बड़े अच्छे स्कूलों में जाते थे। मैं सोचता था कि मैं इसको कैसे पढ़ाऊंगा अच्छे स्कूल में। और आप यकीन करो कि वो उस वक्त वहाँ पे सऊदी अरेबिया में वो वहाँ का जो बेस्ट स्कूल था, वो द मोस्ट एक्सपेंसिव वन एंड द बेस्ट वन, वो उसमें उसको एडमिशन मिला और मैंने उसको करवाया भी और वो पढ़ी भी वहाँ से। फिर सऊदी अरेबिया से मैं बहरीन मूव करने लगा। वहाँ मेरा बिजनेस बहुत अच्छा था तो वो ख़राब हो गया। वहाँ का वो लोकल होता है वो आ गया, उसने बिजनेस छीन लिया एंड आई वाज डाउन। और मेरा एक बड़ा अच्छा एम्प्लॉय भी है और दोस्त भी है हारून, मैं हम लोग स्क्वॉश खेलते थे। तो वो कभी मुझे हरा नहीं पाता था। उस रात उसने मुझे हरा दिया और आके उसने मेरी वाइफ को बताया कि आज मैंने बॉस को हरा दिया। तो उसको नहीं पता था कि वो मुझे उसने क्यों हराया, बिकॉज 1 घंटा पहले मैं वो बिजनेस की पूरी चाबियां जो थी ना वो मैं टेबल पे रख के आ गया था कि भाई आप लोग रन करो, मैं नहीं करूँगा, बिकॉज आप लोग जिस तरीके से कर रहे हैं आई डोंट एग्री विद दैट। एंड द मनी जो है वो बैंक में पड़े हुए हैं, वो आप ले सकते हो, लेकिन जो पैसा मेरे इस दिमाग में है वो आप चोरी नहीं कर सकते। एंड यू वॉन्ट इमेजिन विद इन अ वीक्स टाइम मेरे घर के बाहर एक मर्सिडीज गाड़ी खड़ी थी और मैं बहरीन में अपना दफ्तर बना चुका था। और उसके बाद इट वाज लाइक ग्रोथ ऑल द वे। बहरीन वाज इज़ अ वेरी ओपन सोसाइटी और वहाँ पे दफ्तर बनाया और वहाँ से बहुत सी इंटरनेशनल क्लाइंट्स मिलना शुरू हो गए हमें और हम बढ़ते गए अल्लाह की मेहरबानी से। तो वो बात जो आप वाली थी ना वो ये थी कि वो मुश्किलें तो आती हैं, सारी अबूर भी हो जाती हैं, बट सारा का सारा ताल्लुक जो है ना वो आपकी ट्रस्ट में एक नीयत के साथ है कि आपने कोई काम करना किस नीयत से और आप उसको किस तरीके से कर रहे हो। मैं आई एम नॉट अ वेरी रिलीजियस पर्सन, तो इस दौरान में जब भी कोई चीज़ आती थी, ख़राब होती थी, ठीक होती थी, तो मैं ऊपर वाले की तरफ देखता था कि यार ये आप मेरे साथ कर क्या रहे हो और क्यों कर रहे हो, मेरे में ऐसी खूबी क्या है। तो आज आई एम 54 ईयर्स ओल्ड अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरे सारे दोस्त यार मुसल्लों पे बैठ चुके हैं। तो जब मुझे वो कहते हैं मुसल्ले पे बैठो तो मैं फिर ऊपर वाले की तरफ देखता हूँ और उससे पूछता हूँ कि अब मैं किस मुंह से जाऊँ या किस मुंह से तेरे पास आऊँ। यू हैव डन सो मच फॉर मी, इतनी मेहरबानी है और इतना कुछ दे दिया है कि अब मुझे खुद शर्म आती है जाते हुए। Yeah, तो it's very डिफिकल्टीज बहुत आती हैं, लेकिन मेरे ख्याल में वो डिफिकल्टीज नहीं है, मैं उनको कभी भी डिफिकल्टीज समझता भी नहीं और लेता भी नहीं हूँ। दे आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर ग्रोथ। ऐसे ही आई थिंक उनसे ड्राइव भी बहुत मिलती है आपको। जी। so would you term it failure or a learning process?
No, always the learning. There is no failure in my vocabulary, in my dictionary. There is no word failure, not at all. Failure is actually part of growth. You fail and then you grow. If you don't fail, how you would grow? You can't grow then. Yeah. But I think कोई भी चीज इसमें what I'd like to add is you have to do it with an open mind. आज मैं पढ़ रहा था मार्क ट्वेन का एक कोट है जिसमें कहा था कि ट्रबल वहां से शुरू नहीं होती when you don't know something. ट्रबल वहां से शुरू होती है when you're so sure about something that you're wrong in. You know, if you're wrong about something or आप उसको passionately you're sure about it, that's when the problem starts to come in. You know, so Yes. you can be wrong about something, and you know, having issues or doing something incorrectly, that's as I think, as Ahmed just said, is a learning process. And this is for the viewers as well to say, I think, whenever you're trying to do something, if you fail at it, I think you have to go back to the drawing board and socho कि आप क्यों fail हुए हो, and then not to repeat those mistakes, because a mistake is a mistake only if it's done twice. Yeah, very well said. And I would like to add into this के एक और strategy जो मैंने adopt की है, that is art of giving. Art of giving is not खाली वो जो हमारा Islamic view है कि जी यार एक हाथ से दो और दूसरे हाथ से लो or something like this. वो it's more about art of giving is in the sense कि for example आप जिम जाते हो, तो जिम जब आप जाते हो तो आप अपने आप को हेल्दी करने के लिए या बॉडी बनाने के लिए आप जाते हो ना, तो आप गए ये सब करने के लिए, लेकिन इसमें गिविंग क्या है? आप टाइम दे रहे हो, अपना टाइम लगा रहे हो, और जिम जाने के लिए आप यकीन करो बड़ी मोटिवेशन चाहिए होती है, बड़ी एनर्जी चाहिए होती है, आप वो सब कुछ दे रहे होते हो. सो अनलेस एंड अनटिल यू डोंट गिव यू कैन नॉट गेन. सो वन नीड टू लर्न द आर्ट ऑफ गिविंग. If we take this back to the fact here where our audience is people who are trying to become entrepreneurs, yeah. If I was to say, okay, give us 3 tips that you'd like to give anyone who's aspiring to become an entrepreneur or is stuck in some rut that they're trying to get out of, या वो कहीं पे फंसे हुए हैं और उनको मोटिवेशन नहीं मिल रही, ऐसी 3 चीजें क्या कहना चाहेंगे आप उनको? Well, I think first word I would use is to challenge yourself. I think if you don't challenge yourself, then आप achieve नहीं कर सकते. So in yourself or in your company or in your working environment, always try to create. I mean, जो मैं करता हूँ is a challenging environment create करनी होती है, जो जिसमें कि आप when you create a challenging environment, then people then they see what opportunities are there and how they are going to grab those opportunities. So challenging environment जब तक create नहीं करेंगे आप अपने लिए या अपने employees के लिए या अपनी organization में, उस वक्त तक I think कुछ भी नहीं हो सकता. और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस चीज़ की. And then you have to lay down कि challenges क्या हैं, उनको किस तरीके से आप कहाँ से पकड़ोगे, कहाँ से शुरू करोगे और कहाँ पे जाके उस चैलेंज को आप अचीव करोगे, कहाँ पे जाके आप उसको ख़त्म कर सकते हो. एंड उसके बाद ये है कि आपकी जो एक बिलीफ है, काइंड ऑफ अ बिलीफ यू हैव टू क्रिएट इन योर ऑर्गेनाइजेशन और इन योरसेल्फ कि यस आई कैन अचीव दिस. वो जब तक आप बिलीफ क्रिएट नहीं कर सकते, आप खुद अपनी ग्रोथ में, मैंने अपनी ग्रोथ में उस जब तक मेरे अंदर वो बिलीफ नहीं है, मैंने देखा कि मैं ग्रो नहीं कर सकता. जब वो बिलीफ मेरे अंदर आया तब देन आई रियलाइज्ड, तब मैंने ग्रो करना शुरू किया, तब मैं ग्रो करता हूँ. अगर वो बिलीफ ही नहीं होता तो मैं ग्रो ही नहीं करता. Yeah. So you have to kind of convince yourself before you can convince anyone else. फिर वही बात होगी ना कि हाँ एग्जैक्टली. और उसके इस चीज़ के लिए, इस चैलेंज के लिए आपको जो भी टारगेट अचीव करना चाह रहे हो, प्रोजेक्ट अचीव करना चाह रहे हो, उसमें फिर आपको उसके बारे में पैशनेट होना चाहिए. आपके अंदर डिसिप्लिन भी होना चाहिए. आई एम नॉट सेइंग कि वो आपका पैशन होना चाहिए, लेकिन आपको उसके लिए पैशनेट होना चाहिए. फिर उसको अचीव करने के लिए डिसिप्लिन इज मस्ट. डिसिप्लिन इज समथिंग जो कि मेरे हिसाब से जब तक वो आपकी लाइफ के अंदर नहीं होता, आपके लिए इट्स इम्पॉसिबल टू डू समथिंग. यानी आई वुड पुट इट दिस वे कि पैशन इज योर व्हाई
and discipline is your how. बिल्कुल. Bilal, अगर if someone's struggling for inspiration, what would you say to them? Looking for inspiration. कहीं भी फंसे में चैलेंज आया हुआ है, फंसे में है, क्योंकि कोई भी चीज सॉल्व करने के लिए आई थिंक आपको इंस्पिरेशन की जरूरत होती है. सम पीपल, As a wise man said, तो ये तो आप दोनों बहुत एग्री करेंगे इस चीज पे. बिल्कुल. बहुत agree करूंगा. He said कि फेलियर या इंसान फेल तब होता है जब वो अपने गोल्स से हट जाता है. यू नो, अगर आप फेल हो रहे हैं, अगर आपका एंड गोल फिर भी सेम है, कीप ऑन ट्राइंग, बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ एंड कीप ऑन ट्राइंग. But एक और एक very wise man also said कि the इमरान खान, definition of insanity is trying the same thing over and over again but expecting different results. And that wise man was Albert Einstein. That's it. मेरा वाइज मैन वाज इमरान खान है यार. चलें आप दोनों Who अपनी was known अपनी for his acumen, I think, out of the two, but क्या सर ख्याल? आप कुछ कह रहे थे, अहमद कुछ कह रहे थे. नहीं, मैं ये कह रहा था कि आप लोग अपनी ये जो डिबेट है बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है. आप दोनों के बीच में एक लगता है एक सर्टेन केमिस्ट्री चल रही है और उसको किसी ना किसी रिजल्ट पे पहुंचाने की जरूरत नहीं होती. आई थिंक उसको कंटिन्यू रख लेना जो है ना, वही लाइफ की ब्यूटी है और एक रिलेशनशिप की ब्यूटी है. Of course, you have to see for, kind of recognize what everything is for what it is, and वो चीज evolution एक फैक्ट है, and हर चीज evolve करती है. Exactly. इंसान भी अपनी जिंदगी में evolve करता है, नेचर evolve करती है, हर चीज evolve करती है, तो रियलिटी चेंज होती रहती है. I suppose to add on to what you were saying. और दूसरी चीज, एक और चीज जो मैं ऐड करना चाहूंगा आपके पहले क्वेश्चन पे, वो ये है कि इंस्पिरेशन, ऑलवेज लुक फॉर इंस्पिरेशन. और इंस्पिरेशन देखने के लिए जरूरी नहीं है कि आप कोई बड़े लोगों को देखो, एल्बर्ट आइंस्टाइन को देखो या मार्क जकरबर्ग को देखो. इंस्पिरेशन कहीं से भी ली जा सकती है. बिल्कुल. मतलब मैंने इंस्पिरेशन ली एक बच्चे से. मैं लाहौर में था कुछ अर्सा पहले, तो आई वेंट, रात को हम लोग गुलबर्ग में खाने के लिए गए. तो इट वाज लाइक 11 o'clock एट नाइट, और जब हम गाड़ी से उतरे तो एक बच्चा खड़ा हुआ था और उसके हाथ में वो फूलों का गुलदस्ता था. सो आई लुक्ड एट हिम एंड वो सब लोग चल पड़े टेबल की तरफ. मैंने उसे कहा आप लोग जाओ, मैं आता हूँ. सो आई वेंट टू दैट किड एंड आई आस्क्ड हिम कि क्या कर रहे हो. उसने कहा जी मैं फूल बेच रहा हूँ. तो मैंने उससे पूछा कितने के हैं. उसने मुझे बताया जी इतने का एक फूल है, ये है वो है. खैर रिगार्डलेस कि वो मैंने सारे फूल ले लिए, ये जो कि सारे करते हैं, हम सब करते हैं, और उसको पैसे दे दिए और वो खुश हो गया. नो, I sat with this boy for 10 minutes almost, and I started talking to him कि ये तुम फूल कहाँ से लेते हो, कितने के खरीदते हो, कितने बजे उठते हो. और उसने मुझे बताया कि मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ और फिर मुझे वहाँ जाना होता है. अगर मैं ना पहुँचूँ तो मुझे अच्छे फूल नहीं मिलते. फिर मैं कैसे लेता हूँ, फिर उनको मैं पैसे नहीं दे पाता, मेरे पास पैसे नहीं होते, तो मैंने उनको अगले दिन पैसे देने होते हैं. वो मेरा इतना लिहाज कर लेते हैं क्योंकि मैं बड़े अरसे से ले रहा हूँ. एंड उसकी पूरे एक उस बिजनेस था उसका वो ये यार, और वो 11 साल का था और वो ये बिजनेस कर रहा था. एंड आई टोल्ड हिम कि यार जब मैं 11 साल का था मुझे तो इतना नहीं पता होता था कि मैंने खाना क्या खाना. तो मेरी माँ मुझे बना के दे देती थी. मुझे तो होश ही नहीं थे ना. मैं तो सिर्फ टॉम एंड जेरी देखने के पीछे पड़ा रहता था कि वो 5 बजे टीवी शुरू होता है तो 5 बजे कार्टून चल रहे हैं. हमारे जमाने में यही होता था. पहले आधे घंटे पहले वो तराना आता था, कौमी तराना आता था, फिर कुरान पाक की तलावत आती थी, फिर कार्टून बच्चों का प्रोग्राम आता था. तो हम तो उसके पीछे होते थे. और तुम 11 साल की उम्र तुम ये कर रहे हो, तुम तो एक बड़े जबरदस्त जीनियस इंसान हो. मैं तुमसे इम्प्रेस हूँ. वो बेचारा यूं मेरी तरफ देख रहा था कि ये बंदा पागल, या ये पागल है या मुझे पागल बना रहा है. बट यू सी, फॉर मी वो एक इंस्पिरेशन थी. मैं कोई वहां पे इसलिए नहीं बैठा था कि मैं उस बच्चे को इंस्पायर करूं. ये मेरा मकसद नहीं था. मेरा मकसद सिर्फ ये था कि मैंने इंस्पिरेशन कैसे लेनी है इस बच्चे से. सो वो आर्ट ऑफ गिविंग की जो मैं बात कर रहा हूँ वो ये है. दिस इज व्हाट आर्ट ऑफ गिविंग इज. And I think उस दिन I read a quote the other day as well, which was कि you should
everyone you speak to, you should listen to them because you'll always learn something from them that you don't know. Exactly. वही आपकी वाली बात, चाहे वो CEO है, चाहे वो delivery boy है, with no disrespect to any of them, लेकिन you can learn from anyone's experiences. इंस्पिरेशन है यार, कहीं से ले सकते हो. बिल्कुल, एंड उसी की वजह से हम ये स्टार्टअपिस्तान लेके चल रहे हैं, बिकॉज हम काफ़ी लोगों से बात करते हैं इन आर सोशल सेटिंग, जिसको फिर आप सोचते हैं यार ये हमें पहले पता होता तो क्या हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाते, या ये बाकी लोगों को बताने वाली बात है. एंड दिस इज़ द प्लेटफॉर्म दैट वी वांट टू यूज़, ताकि हम लोगों के एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकें. और वो जो आप सक्सेसफुल, आप जैसे माशाल्लाह बिलाल जैसे सक्सेसफुल लोग हैं, उनकी थॉट आप जैसे हम लोगों तक पहुंचा सकें. That's the whole idea behind it. And obviously we get to see pretty faces like Ahmed Shah, So अच्छा, नहीं वो खैर मजाक अपनी जगह, बट इंस्पिरेशन वाली बात बहुत ज़रूरी है. और ये मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा, ये किस्से मैं इसलिए नहीं शेयर कर रहा आपके साथ कि आपको मैं बता सकूं कि मैं कितना अजीम इंसान हूँ. ये फॉर मी, मैं किसी को एडवाइस नहीं करता कभी भी, बिकॉज मुझे नहीं पता कि मैं, सिंस आई एम नॉट वेयरिंग हिज शूज, तो मुझे नहीं पता कि वो किस कंडीशन में है. तो अगर लोग मेरे से एडवाइस मांगते हैं तो आई नेवर एडवाइस देम, आई जस्ट डू सम एक्सपीरियंस शेयर विद देम. सो उस एक्सपीरियंस शेयर से आप क्या मतलब निकालते हो, अपना क्या रिजल्ट निकालते हो, और उस रिजल्ट को कैसे अपने ऊपर लेके जाते हो, अपने सर्कमस्टांसेस के ऊपर लेके जाते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है. सो प्लीज डोंट थिंक कि मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ कि मैं ये प्रूव करना चाहता हूँ कि मैं बहुत बड़ा इंसान हूँ. मैं इसलिए नहीं बता रहा, मैं सिर्फ एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ. that's very interesting. Thank you for sharing your experience. आपसे बात करके भी as always a pleasure. बहुत मजा आया. But I'd like to thank you for taking the time out to speaking to us and our audiences. And yeah, looking forward to speaking to you again. Thank you guys. Thank you very much for actually letting me in and giving me this opportunity कि मैं यहाँ पे आप लोगों से बात करूँ. और मुझे खुद बहुत मज़ा आया अपनी लाइफ स्टोरी दोबारा से रीथिंक करके, या उसको, उस जर्नी को दोबारा से रीलिव करने का भी एक अपनी मज़ा होता है. So I enjoyed it. Thank you for giving me this opportunity. So thank you so much for your time. Thank you. No worries at all. Thank Wish you. you all the best, guys. Thank you very Thank you. much. Thank you. Thank you. Allah Hafiz.